Good evening, guys and girls. Again, it's a pleasure for me that we are able to organize this good long event, which is going to be there for a week. And today is a special day, of course, because I'm very happy. What I wanted to see my probably the closest friend, my dear sister, and my classmate since 11th standard, right, Nishu? Yes. Since 11th standard, we have seen each other in blacks and grays, and and we will be seeing each other even getting bored. Oh, yes. It's a pleasure, and she is the most sincere girl of my life. I have seen most sincere. After that, I have seen the sincere girl to be my wife. So these are the two sincere girls I have seen in my life, actually. And Dr. Manisha is sincere and hardworking too. And my sentence I always say, beats talent. Okay, so she's sincere, intelligent, hardworking, talented, of course, and very honest person. I have seen a very spiritual personality, a very spiritual woman, and a very strong, very staunch follower of mind method. Dr. Manisha is practicing since 1994. So we have started the practice same time, and she's done her undergraduate from Motiwala Medical College, Nasik, and postgraduate from Yirla Homeopathic Medical College. And she's practicing in Virar since almost 27 years, 26, 27 years. And she is the improvised version of mind because Dr. Manisha has studied Dr. Vijaykar's method also. She has done classical practice also. So whatever you will see will be the reflection of her experience, her knowledge, her studies, and all the schools that she has gone through, she has studied through. So it's a pleasure and honor for me to welcome my sister, Dr. Manisha Soni, Dr. Manisha Kapoor. Dr. Manisha, over to you. Thank you, Liaquat, for this warm, very warm welcome. And I think if Dr. Liaquat wasn't there, I wouldn't have come into the mind method, isn't it? He put me forcibly into the Ignited Minds group, and that's how I'm here. But I'm very, very fortunate to be a part of this platform because it's a wonderful learning. Under his mentorship, like he said, we are here. We've been in college also together, but under his mentorship, everything is learning with fun. So it has been very nice. He is always there to help. So this platform is good. Very, very nice. This Women's Day that done by Ignited Minds under expert mentorship of Dr. Liaquat Namole. and also SHS. Yes, and HSH. Thanks to Dr. Ashok Avadia also. So thank you very much for this welcome. This playway method, guys. Please remember, we learn playway method. Yes, it's a playway method. So we are in the school. Don't forget that we are not in the college. We are in the school. Still in the school. Okay. So over to you, please. Now I'll shut my mouth. Spotlight her video. Thank you. So, and I request all the members, those who join late also, kindly keep your mobile on mute mode. There is a button mute. You touch that, and you stop your video also. So what happens during the recording? Actually, the speaker should be there. So if you are speaking or something, even if you are new, if you join late also, kindly keep your mobiles on mute mode. Thank you. So thank you everyone for this wonderful welcome. हेलो. Yes, ma'am. अशोक भाई का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है तो उन्होंने सॉरी बोला है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. ओके. हाँ, तो देख रहे हैं ज्वाइन हो रहा है क्या. Yes, thank you. So good evening, and today I thought I'll just share about homeopathy in thyroid cases. So this is a great learning platform. We are learning every day,
One And second, Ishu, one second. बेटा मैडम का वीडियो स्पॉटलाइट करो. हाँ केला है सर. केलंय ना सर. ओके. पोस्ट बनवायला लागेल मॅडम तो. केलाय स्पॉटलाइट पोस्ट नाही झाले. पोस्ट कर दो. हो गया. Okay. So I'll just share. Is it visible? Yes. Yes ma'am. Yes. So I thought I'll just share about homeopathy and thyroid. And so what I wanted to share was basically about cases like the cyst of thyroid, or swellings or tumors of thyroid, whether it is adenoma or goiter or nodules. So ये सारे जो cases हैं ना, जो सारे जो conditions हैं, these are like surgical cases. So normally people come with a mindset or a thought process कि इसको तो बहुत time लगेगा, ये जल्दी ठीक नहीं होगा, इसमें surgery is the major option, तो homeopathy से कैसे जल्दी से ठीक होगा. So today I thought that I would like to also talk about, of course, homeopathy, the efficacy of homeopathy, but also the speed with which homeopathic medicines act. And this confidence, this thought process of looking at it like a very, very simple process is again coming from my friend, my guidance from Dr. Liaquat. So we'll start with this case. This is not moving. So this is a case of a thyroid cyst. So this patient is a female, age 33, and she came to me with a very painful thyroid cyst. तो एक महीने से उसको गले में बहुत सारी swelling थी और वो मेरे पास आई और उसके पहले she had already visited lot of allopathic doctors और सारा कुछ ट्रीटमेंट कर लिया था और फिर उसको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि वो ऑपरेट कर ले और वो cyst was very painful, उसको बात करने में मुश्किल हो रही थी. She had pain during swallowing and also she was not able to speak, she was not able to sleep also. She said that I cannot sleep for more than 2 hours because अगर मैं turn करती हूँ then also it is pain. और recently she got her FNAC also done. And this patient, she has been known to me because she's in the same place. So since the time she was in school, and तब से वो मेरे पास आती है for any small complaint. So this time she came with this complaint of thyroid cyst. So जैसे केस आगे चला गया तो now जैसे हम लोग केस हिस्ट्री में लेते हैं कि जो पेशेंट हमको बोलते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं या नोट डाउन कर लेते हैं और we repertorize the case. So along with whatever information the patient is telling you, so what I have learned again, thanks to Dr. Liaquat, that the entry or the starting of the case is very important. So friends, how the patient begins the case is very important. Otherwise, if we miss the beginning, many a times we take the wrong track and our remedy also can change. So it's very important that right from the beginning, hamare aankheं, all our 5 senses are all alert and we keep looking at the patient, patient का किस तरीके से उनका बोलना है, किस तरीके से patient का expressions है, किस तरीके से patient का how कैसा है. Also, जैसे how Dr. Hahnemann has said to be a keen observer. So everything needs to be observed. Not only what the patient says, but how the patient is saying और वो उन्होंने किस तरीके से वो आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को present कर रहे हैं. Everything is important. So this case, the entry,
it was like she came to the door, she stopped at the door and of the cabin, and she said, "May I come in?" Then she came inside, she removed her mask, and she said, "Do you remember me?" So when I saw her face, even I smiled, and I realized that iski awaaz pehchani bhi thi. So she came inside, she introduced me to her husband. She said that he's my husband. And then she continued to stand. So then I told them that kya aap log baitho. And then I said, ki, okay, bataiye. So she started, "Ma'am, there is a small or can be a bigger problem since 1 month." And then she gave her entire history, about how this complaint कि 1 महीने से ये प्रॉब्लम था, फिर मैं इस डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया. So she mentioned the names of various doctors in that area. और कि और उनका जैसे वो MD है, उनके क्वालिफिकेशन के साथ वो सारी चीजें उसने बताई. और पूरा उसने डिटेल में मुझे पूरी कहानी बताई उसकी, पूरा डिटेल में. और शी कम से कम वो आधा घंटा से लगभग आधा घंटा तक उसका केस चल रहा था. वो कंटिन्यूस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड वो मुझे सब चीजें बता रही थी. सो और बीच में आई ट्राइड टू ब्रिंग हर बैक टू द केस, बट शी वुड अगेन start and say that ye cheez, so that she was telling me each and every small detail of whatever she has gone through. Then usne apni reports nikali, and then she had brought that entire file, and she said, "I'll show you the entire reports, go through the file once, you'll come to know the entire thing." I said okay, and she made it a point to see that I have seen each and every report. अगर समझो कोई रिपोर्ट मेरे से मिस भी हो रही थी, तो शी मेड इट अ पॉइंट टू सी कि दिस इज ये वाली रिपोर्ट है, ये वो वाली रिपोर्ट है. तो शी मेड इट अ पॉइंट टू सी दैट ईच एंड एवरी रिपोर्ट मैंने देखी है. एंड देन मेरा क्वेश्चन था, देन आई सेड, व्हाट इज द वरी? तो पेशेंट रिप्लाइड, फर्स्ट आई थॉट इट कैन बी मैलिग्नेंस as it is bouncing back again and again, and I am very scared of operation. I feel it should not be growing more. इस तरीके से उसने बताया. And then she said, I asked her, I said कि क्या लगता है तुमको ऑपरेशन का, like what is the fear? She said कि I am very scared of scalpel, and मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे बहुत डर लगता है, बट मुझे लगता है कि ये it should not grow also. So I asked her, I said, what are you thinking? So she said, look, I'll tell you that I am a biotechnology student. So I know how it works, I know the entire scenario. It comes in my mind. They'll take a smear, then they'll make a slide, then they will look, then they will examine, then they will think, and then they will, probably come to the conclusion that it might be cancer. So all these thoughts, they come like a flash in my mind, she said. And she said, my thoughts run too fast. And while saying all this, she, was smiling, and her hands, she was using her hands, and aankhein ekdam badi badi karke, her eyes were very wide, with when she was explaining. So then I asked her, I said, aur kuch tumko lagta hai, kuch dar? She said, no, I don't have any fear. I don't even fear death. I am highly stressed. The ultimate thought is that it can be malignance or benign. So ये patient ने मुझे बताया. Then I asked her, I said कि और क्या तुम्हें ऑपरेशन के बारे में क्यों ऐसा तुमको डर लगता है? So उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, when she was suffering from tuberculosis. तो she was admitted in the hospital, और वो hospital का bed और वो सारी tubes, वो मुझे अभी भी याद है. तो ऑपरेशन तो I don't want. तो this is what she explained. Then she said कि मुझे पता है कि इसके अंदर homeopathy is the best, has the best answer. So I said okay, and she said that the only name that came into my mind was your name. I said okay, and then she said, then I said कि let me know more about your situation. So her life situation is that she is a Gujarati girl, and she has married against her parents' wishes. She has married a Christian boy. So when she had run away, घर से भागकर उसने शादी करी थी. So that made her father and of course mother very unhappy, and she plus also has a autistic child with delayed speech.
then they are staying in the same area. That is, parents are also staying in the same place, and the daughter also after marriage is staying in the same place. So because of this, the father is continuously visiting her regularly. उनके घर जाते हैं. So ये चीज का उसको बहुत स्ट्रेस होता है कि फादर आते हैं और बोलती वो तमाशा भी करते हैं कभी कभी, बिकॉज फादर ऑल्सो इज वेरी एग्रेसिव, वो थोड़े अब्यूजिव भी हैं, कुछ गुस्सा आ गए तो गाली वाली दे देते हैं, तो इसको लगता है कि वो तमाशा कर देंगे, तो शी डजंट लाइक एंड हर हस्बैंड ऑल्सो डजंट लाइक. सो पेशेंट सेड, आई एम स्ट्रेस्ड हैंडलिंग वर्क and house and son. My father is creating a mess, she said. So, she said that my main worry is my father. He does not understand. मेरी शादी को 9 साल हो गए, he still doesn't understand that, मेरे घर में कैसे आना है, कब आना है. फिर मेरा दिमाग बहुत चलने लग जाता है, वो मुझे स्ट्रेस होता है बहुत. She said, मुझे पता है कि ये सब, thyroid की वजह से ही होगा. And then she told her husband that when I got my first periods also, I had come to ma'am only and, had taken treatment. So she said, I'm stressed trying to handle my work and my son. And she said, I feel that I'm like a carrot in a big noodle soup. That is what she told me. So this is the entire, situation of the patient. And उसका presentation कैसा था clinic में? कि एक तो उसने बहुत सारी अपनी पूरी मेडिकल फाइल की जो पूरी हिस्ट्री थी उसकी, वो पूरी she had carried in a bag and she had shown me all her reports. Then उसने अपनी मुझे पूरी हिस्ट्री डिटेल में बता दी थी क्लिनिक में. एंड ऑन ऑब्जर्वेशन उसके हाथ में एक बहुत बड़ा टैटू था ऑन हर फोरहैंड. ठीक है. सो दिस इज about the entire case. वैसे उसका beginning कैसा था, and then what all she told me, the information that we have got, and this is how she presented herself in the clinic. ठीक है. So now let me hear from everyone कि अब तक like what is it that you have understood, ये patient के बारे में क्या लगता है, किस तरीके की lady है, how do you feel about this case, कुछ मन में rubrics आ रहे हैं. So please share. Hello, ma'am. Yes. She is very communicative and expansive. She wants you to know everything about her so that you don't miss anything in her history. So she is careful that you have seen every report of hers. Okay. And you totally get clearly her situation at present, what she is, what are there in the pathological reports, what she wanted to see you. So she looks very expansive as such. Acha, but do you think she's communicative? Why you feel that she's communicative? The way she tried to show that who is she. She used to meet earlier. She tried to show her face to you. कि आपने पहचाना क्या मुझे. So she wanted to build up that rapport with you first. Okay. And then she tried to show you all the reports, कि how the things have happened to her and how her reports she has taken and all that. Okay. Okay. With her entry, I can say all these things. So Okay. She tried to communicate with you. Yeah. Okay. 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 ठीक है. Yes. Anything else? What else? What more have we, understood from this patient's information? Somewhere she is feared about the suffering her mother had in the hospital. So she has that all vision in her mind. कि मम्मी को क्या क्या हुआ था, वो बेड, ये वो जो सफर मम्मी ने किया होगा हॉस्पिटल में. उसने ऐसा बोला? उसने बोला ना, I don't remember. I remember the bed and all that. My mama was admitted and वो कुछ आपको बोला ना उसने कि मेरी मम्मी का मुझे याद है. So somewhere she doesn't want to get admitted in hospital. वो पूरा scene उसको repeat flash हो रहा है उसके दिमाग में कि मम्मी को क्या क्या ये लोगों ने, how they had tackled her and that she doesn't want to suffer now. ऐसा मुझे लग रहा है. हाँ. Okay. Okay. हाँ. Okay. Okay.
Yes, many have messaged about fear of operation. Okay. What else? Anything else? उसका starting में कैसा लगा आपको when she came, like how you just said that you felt that she is communicative. What else do you find very characteristic? So we in from the entire case हमको what is very characteristic, very peculiar जो आपको लगता है which is there in that entire case. आपने बोला तभी वो बैठी, उसको अभी कैसे लेना है मुझे मालूम नहीं। वो खड़ी थी when she was trying to tell you about her, फिर आपने बोला बैठो, तभी वो बैठी। That is something peculiar about her behavior. Okay. Yes. ऐसा, हाँ। Yes. Okay. मुझे बहुत कुछ पेडेंट ले इंटरप्रेट सकते हैं? Yes. पेडेंट ले सकते हैं क्या? क्या? पेडेंट? क्यों पेडेंट? क्योंकि बहुत पर्टिकुलरली हर चीज फाइनली दिखा रही है, ये रिपोर्ट देखो, वो रिपोर्ट देखो, कुछ भी मिस ना हो जाए। ओके। पेडेंट इज मतलब इट कम्स फ्रॉम पांडित्य ना, अपना नॉलेज बताने वाला। तो ये नॉलेज बता रही है क्या मुझे अपना? नो नो नहीं। हाँ। ओके। Yes, we have many messages also, chats. What else? Good thinking. Matlab, observation is there. Yes. What else? Throughout, what is there? How she is telling. How कैसा है patient का? सर मैडम, एक तो उसने क्रिश्चियन से शादी की है, which is something different. मतलब काफी रिवोल्टिंग है, ऐसा किसी ने बोला तो मान गई, ऐसी नहीं है। और ये टैटू भी किया उसने हाथ में। मतलब काफी मॉडर्न या एक्सेप्ट करती है जो भी चलता है वो। शी इज विद द पीरियड। विद द पीरियड। हाँ, वो जूने जमाने वाली नहीं है। नहीं। हाँ, यस, ट्रू ट्रू, वेरी गुड। यस, ओके। सो मॉडर्न है और ये सब कर रही है, तो वो क्या है फिर? बोल्ड, टैटू वगैरह बना रही है अपने हाथ पे। किसी ने बोला ना बोल्ड, ऐसा बोल सकते हैं। बोल्ड, करेजियस। आई डोंट नो करेजियस लेना चाहिए कि नहीं। लिबर्टिनिज्म ले सकते हैं। ओके, क्यों लिबर्टिनिज्म? वही उसका जो बोल्डनेस है, या जो लेटेस्ट उसको टैटू चाहिए, ये चाहिए, यानी वो हिसाब से। एंड शी कैन डू इंटरकास्ट मैरिज, लाइक that is okay, like it is nothing new in the present era. But from this I felt ki whether she is in libertinism of okay, so or can that be coquettish also, like having tattoo and all. Okay, coquettish. You think, you empathize, like why would she come with, why would somebody have a tattoo on your hand? And I'll show you the picture also. It's a big one on their entire forearm that she has made. मतलब आपकी नजर उस पर से हट नहीं सकते, you cannot miss it, that big that she has made. So like the thought comes in your mind कि कब हम ऐसे करते हैं. So this is one part of the presentation. Apart from that, और क्या चल रहा था उसका throughout the case, उसका उसका कैसे था? मैम वन थिंग इज बहुत नोटिसेबल थी उसमें, वो हर एक चीज बहुत मतलब प्रोग्राम के जैसे बता रही थी, कहीं कुछ मिस ना हो जाए अपनी फाइल रिपोर्ट्स। तो मैम प्रोग्रामिंग एवरीथिंग कुछ ले सकते हैं ऐसा कुछ? प्रोग्रामिंग, बट आप जो सोच रहे हो ना, बहुत सब लोगों ने जो जिस तरीके से सोचा है ना, वो सोच बराबर चल रही है। ऑफ कोर्स ठीक है, वो रूब्रिक तो we'll come to that later on, but you all are thinking on that right angle, that she is a very open girl
and किसी ने Audacity लिया है, किसी ने Foppish बोला है. Okay, so programming नहीं, she is not programming things. मुझे वो एक्सपेंसिव लगी, हर चीज को डिटेल में समझा रही है आपको कि आपको उसकी जो भी कंडीशन है, you understand properly and you can give a good medicine to her. Very good, very good. Now think more, think more on why she is doing that. Why would she do this? Very good. सबसे पहले तो she believes in homeopathy क्योंकि आपसे दवाई ले रही है, उसको उससे फर्क भी पड़ा है. She wants to skip that surgery. इस सर्जरी के बदले अगर होम्योपैथिक से हो जाता है तो that would be well and good. And she knows कि होम्योपैथिक में इतना डिटेलिंग देते हैं तो अच्छी दवाई मिलती है, ऐसा मुझे लगता है. So she is trying to become more and more expressive about whatever she is suffering. कि उसको मालूम है होम्योपैथ डिटेल में लेते रहते हैं सब चीज. Yes. What's your name, ma'am? What's your name? I'm Dr. Dolly Doshi, ma'am. Yeah, Dr. Dolly, you're thinking very, very nicely. You're really your thought process is going in the right direction. But just trying to understand more. Go deep and to understand that why she is doing that. हाँ, ठीक है, madam. I'll try that. Okay. Yeah. Okay. Yes. Anyone else? बहुत सारे लिखा भी है. She wants you to cure her suffering. Okay. What else? Fear betrayed. Okay. Why fear betrayed? रिपोर्ट्स भी केयरफुली दिखा रही है, कुछ मिस हुआ तो वापस से बताती है कि ये भी देखो. Yes. है ना, कि कुछ मिस ना हो जाए. Okay. All carrying all medical history, all reports. Yes. और उसको उसने एक्सप्लेन भी किया, मतलब पूरा एक एक करके दिखाया डिटेल में. हाँ. Yes, very good. Yes, so we'll go for the understanding now. So how do we proceed? Now अभी ऐसा patient हमारे सामने है तो let's understand कि patient हमारे पास क्यों आया है. So why the patient has come? Because she did not want to get operated. So सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि yes, she doesn't want to get operated and she wants to instead of operation she wants to take medicine. Next important जो हमने जैसे बताया कि she's speaking about herself in detail, like all of you understood that वो सब चीज अब starting से end तक पूरा बता रही है. What Dr. Dolly said, that she is expansive or she's very communicative and so ये सारी details वो हमको बताई जा रही है और सारे reports भी उसने सब लेके आई है और she made it a point to see that मैंने सारे reports देखे. She showed me everything and उसने बोला भी ना, go through the reports. She told me go through the file and then you'll know the entire thing. She's telling me go through the file, you'll know the entire thing. So यहाँ पर we understand that let's go step by step कि इसमें सबसे पहले उसका जो entry था, what many of you all have mentioned about the way she has entered. So that was the when she said may I come in, so that was like she's giving a lot of respect, and respect when she came and then she stood also, she did not sit till that time. So this is where I understood it as veneration. So यहाँ पे वो patient का veneration, that respect to the to the chair, to the doctor, that was what was portrayed over here. And after that like how everyone has said that when she does not want to get operated, so what is this if she does not want to get operated? Fear of operation, fear injury, escape. Yes, very good. Escape attempts too. This is escape attempts too. And also why she wants to escape the operation? Because of injury. Yes, very good. Injury. Very good. Or maybe post-op or complication she don't want to face. But she didn't mention anything like that, na? That will be too much of hypothetical thinking, na? What she said was, she said, na, I am very scared of operation. I am very scared of scalpel. She mentioned that, I am very scared of scalpel. So scalpel से क्या होगा? Cut होगा, injury होगी.
So this is fear of being injured. And then next, what was it that she continued talking about herself. So यहाँ पे we get, communicative is our biggest trap. That we will get thinking that वो starting से end तक हमको बता रही है. तो बहुत से डॉक्टर्स ने चैट में डाला भी है about the meaning. So what is this? What she was continuously trying to. मैम लाइट डिजायर, मैम लाइट डिजायर लग रही है. लाइट डिजायर क्यों सर? मैम क्योंकि वो चाह रही है कि ताकि आप अच्छे से देख लो और अच्छे से इलाज करो, क्योंकि इंजरी का उसको डर है. इंजरी का डर है, ये तो बात बराबर है, लेकिन अच्छे से देख लो उसमें उसको क्या लाइट मिल रही है? लाइट इज जब वो पेशेंट आपसे पूछेगा ना कि मुझे बताओ, या उनके एक्शन से, तो ये तो मुझे दिखा रही है. बिट्रेड का डर है. यस, वेरी गुड. दिस इज फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड. सो ये फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड जो है ना, ये पेशेंट का थ्रू एंड थ्रू चल रहा था. वो सारे, like how Dr. Vaishali also very rightly said, she brought all her reports. सारे रिपोर्ट्स लिखे आई ना, और उसने मुझे क्या बोला पहले, go through them so that you will know the entire thing. तो ये betrayal का feeling उसके अंदर through and through चल रहा है. And in fact towards the end of the case उसने मुझे बोला भी कि मैम ये हो जाएगा ना, ठीक, पक्का हो जाएगा ना. तो उसने मुझसे वापस कंफर्म भी किया था कि ये हो जाएगा ना. सो आई टोल्ड हर, आई सेड वो बढ़ेगा नहीं तो पक्का हो जाएगा ना, ऑपरेशन तो नहीं. सो दिस वाज ये उसका जो कंटिन्यूस, उसने जो सारी हिस्ट्री बताई कि मैं यहाँ गई, मैं इधर गई, सारी जगह की उसने ट्रीटमेंट ली. सो दिस वाज हर फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड. यस, वेरी गुड. व्हाट एल्स वाज देयर इन this case? So we have understood that it is veneration. We have also understood that there is fear, betrayal. And वो जो reports हमको दिखा रही थी, उसमें और आपको क्या समझा है? What else you can understand from that? और क्या समझ में आ रहा है इस केस में? Anything else apart from this? पापा से परेशान है. इतना समझा. पापा से परेशान है. मतलब उसके घर में शांति नहीं रहने देते उसके पापा. घड़ी he is making the environment problematic. Yes. ऐसा, yes. Which husband is not liking, and she is tired of making the harmony at home. पापा के कारण वो पूरा टाइम बिगड़ता जा रहा है. वहाँ का जो भी सराउंडिंग है वो. Yes. कैसे लेना है मालूम नहीं, but that is the thing which is making her more irritable. Because yes, of that, yes. she is not able to handle the things. Yes, right. Very true. What else? In the entire case, what she is saying, what you said, ma'am, that is very true. वो retrospectively very well, know the case. You will understand ये कहाँ पर, how this thing has begun. तो वो चीज बहुत important है. और क्या था उसके केस में जो सामने सब दिख रहा था, जो बोल रहा था, वो जो कर रही थी, जिस तरीके से एक्सप्रेशन था ना मैम, एस्टोनिश एक्सप्रेशन था जो आंखों का, वो आंखें बड़ी बड़ी करके दिखा रही थी. आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाना, एस्टोनिश्ड, डायरेक्टली आप एस्टोनिश्ड सोच रहे हो. ओके. व्हाट एल्स? आंखें बड़ी बड़ी कर दो. आंखें बड़ी बड़ी करने के साथ साथ और भी वो तो कुछ कर रही थी ना. एस्टोनिश्ड में ना इंसान को आश्चर्यचकित होना जरूरी होता है. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है कि भौचक्का होना, आश्चर्यचकित होना. आंखें बड़ी करने के और भी रीजंस होते हैं, थोड़ा सोचो आप. कुछ हैंड जेस्चर्स भी थे ना उसके. यस, हैंड जेस्चर्स भी थे. ट्रू. ओके, तो लेट्स सी हर एनालिसिस. उसका वो टैटू हम अफेक्टेशन बोल सकते क्या, स्टाइल मार रही है? हाँ, बिल्कुल. वेरी ट्रू, वेरी गुड. सो उसका वैशाली, वेरी गुड, दैट इज वाज हर अफेक्टेशन. वो भी थ्रू आउट चल रहा था उसका अफेक्टेशन.
वो क्या बोल रही थी स्टार्टिंग में कि मुझे बहुत पेन होता है ना, बहुत पेन होता है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, और लेकिन वो 15-20 मिनट तो बोलती जा रही थी, isn't it? और साथ में उसने शी इज अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, तो उसने वर्ड्स कैसे यूज करे थे, मैलिग्नेंस एंड बेनिंग। सो वो सारा जो उसका था behavior, that was all affectation also. She was trying to impress. So what she was showing na, that her अच्छा report, मैम, trying to impress is affectation. yes, trying to artificial behavior, trying to impress others is affectation. So when she started her case na, that reports उसने मुझे जो दिखाई, that is वो अपना किस काम के लिए आई थी मेरे पास, that is she came for her thyroid cyst का treatment. So this is talking business, and then ये characteristic है ये remedy का, that they see to it that doctor सारे reports one by one देखे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए डॉक्टर के पास से. And then because this patient has got this fear of being betrayed कि डॉक्टर से अगर कोई गलती हो गई तो, जैसे वो 1 महीने से मेडिसिन ले रही है, ठीक हो रहा है, फिर से वो वापस हो रहा है स्वेलिंग, फिर ठीक हो रहा है, फिर वापस स्वेलिंग हो रहा है, वो अलग अलग शी इज गॉन टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एक्सपर्टीज आल्सो, एमडी मेडिसिन, एंड शी मेंशन्ड सो मेनी. सो वहां से भी उसको ठीक नहीं हुआ. सो अब यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी उसको दैट डर है मन में पेशेंट के. सो दैट इज फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड. तो वो उसका थ्रू आउट उसका चल रहा था, इसीलिए वो इतने डिटेल में सारी हिस्ट्री बता रही थी. मैं उसको अगर स्टॉप भी करूं तो भी वो वापस पूरा शी मेड इट अ पॉइंट टू सी कि मैंने सारी रिपोर्ट्स भी देख ली. सो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग वाज गोइंग थ्रू आउट द एंटायर केस. दैट वाज द कोर ऑफ द पेशेंट, एंड वो थ्रू आउट उसका चल रहा है लास्ट तक भी कि ठीक तो हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा. शी मेड इट, वो कंफर्म कर रही थी. Affectation also very true, that she is that behavior. And then ये जो tattoo उसने किया था, that was her, she's trying to create an impression, so that is where I understood it as impressionable. Also impressionable became confirmed when I asked her about the operation. So what she said, that no, I remember my, I have seen my mother, I remember the hospital bed and the pipes. No, so इस पूरी तरीके से अपने वो gestures के साथ वो बात कर रही थी. So that impression also she is carrying in her mind, that उसकी मम्मी का जो pipes लगे हैं, hospital bed है. So because of that also, so this impressionable became got confirmed towards the end. Then delusion, images, phantom sees. So this is this patient, what she felt was, उसके मन में वो feeling आ रहा है, उसके मन में वो image आ रही है डर की कि वो स्लाइड लेंगे, फिर वो स्मीयर बनाएंगे, फिर वो चेक करेंगे, फिर वो देखेंगे, फिर वो कहीं कैंसर हुआ तो. So she said na, all those image, that those thoughts come in a flash, so that it runs in her mind. So that is the images which the patient sees. That we can take as delusion, images, and phantom sees frightful. Yes, frightful also. Right. Some rubric. Yeah. So that is causing that fear in her mind. So that is, and then there was one observational rubric, that is her, she had this, when she was talking, her tongue was lapping to and fro. Okay. So this is hyoscyamus. Many of you all have got the, mentioned the remedy in the, in the chat. So yes, this is hyoscyamus. Very characteristically, this patient has a lot of gestures, and the way the patient talks is, very characteristic. So now just, जिस तरीके से patient ने बात करी,
Can you think of something, like how the patient's speech was in this case? How was the speech of this patient? Anybody? Speech कैसा था ये patient का? fearful होता है क्या? ऐसा डर डर के बोलता है ऐसा है सर? डर उसका था, इसीलिए तो वो सारी चीजें हमको बता रही थी, सारे रिपोर्ट्स हमको दिखा रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रही थी वहां पर उसका डर दिख रहा था क्या? नहीं, मतलब हाइड करती है उसको। मैम कॉकेटिश हो सकता है? कॉकेटिश तो नखरा है ना डियर, कॉकेटिश ये नखरा कर रही है क्या? मैंने केस तो नहीं देखा क्योंकि मैं लेट हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अफेक्टेशन वाला जो बंदा होता है वो अफेक्टेशन के उसको शो करता हुआ ही दिखाता है। यस, अफेक्टेशन तो है इसमें, अफेक्टेशन तो है। अफेक्टेशन से और अगर आप इसको समझेंगे, इस पेशेंट का जो हाउ था, जैसे मैंने बताया कि जब वो बता रही थी कि वो स्लाइड लेंगे, देन दे विल टेक अ स्मेयर, देन दे विल डू दिस, ऐसे वो पूरे इस तरीके से आंखें बड़ी बड़ी करके स्माइल करके बता रही थी। सो ऑफ कोर्स रेमेडी तो पता है, यहाँ सामने चार्ट में है कि हायोसैमस है, लेकिन ये जो जेस्चर है ये पेशेंट का, ये थोड़ा सा अगर हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली समझेंगे तो व्हाट इज दिस? एक्टर। ये लाइक एन एक्टर, like an actor. Okay, okay. More to that. How did you feel जब इस तरीके से कोई आपके सामने 15-20 मिनट बात कर रहा है और बहुत ऐसे करके स्माइल करके, क्या लगता है फिर तभी? Vivacious. Very good. Yes, very good. This is speech vivacious. So her speech was very clear, very fluent, so speech vivacious. So she made a lot of gestures, haathon ke, aankhon ke. So gestures makes extravagant, of the gestures makes not extravagant, gestures makes hands involuntary motions, and her speech also, speech vivacious. So very lively, she was explaining her entire, history. और वो सब करके बता रही थी, and she was very जैसे lively animated, जैसे हम बोलते हैं ना कि when she was also, जब वो बोल रही थी ऑपरेशन नहीं तो इस तरीके से करके वो सारे जेस्चर्स के साथ वो बातें कर रही थी. So this is about yes, trying to impress. Yes, correct, trying to impress. So this is about, yes मैम ये वेनरेशन और इम्प्रेशनेबल एक बार आप बता दीजिए, समझ नहीं आया. वेनरेशन कैसे है कि जब पेशेंट आपके पास अंदर आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अंदर आते हैं ना, कुछ रुक के रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट के साथ अंदर आई. उसने पूछा मुझसे कि मैं अंदर आ हूँ, मतलब मैं कम इन, और फिर मैंने उसको बोला बैठने के लिए, तब वो बैठी. तो वेनरेशन इज रिस्पेक्ट. वेनरेशन इज जब हम किसी, हमारे से कोई सीनियर है, हमारे से जब हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसको हम आदर देते हैं, दैट इज वेनरेशन. वेनरेशन इज टू द चेयर, टू गॉड, दैट इज वेनरेशन. मैम वेनरेशन और रेफरेंस अराउंड दोज. हाँ, तो रेवरेंस में भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, बट टू एवरीवन. It is reverence to those around him, to everyone. So she will show respect not only to the doctor, but also to, if there is a staff, she will show respect to everyone. So यहाँ पर तो she showed respect to me. So that is where I took it as veneration. Veneration. Okay, yes. Ma'am, impressionable. Impressionable is like impressionable person is जो किसी को impress करता है, कुछ करे जिस तरीके से सामने वाला impress हो जाए, या फिर वो किसी का इंप्रेशन भी कैरी करता है. जैसे कोई, हम लोग किसी का हेयर स्टाइल फॉलो कर लेते हैं, कोई एक टिपिकल बियर्ड पैटर्न, somebody wants to just copy somebody, so that way you try to create an impression. So this girl had that big tattoo,
ना, तो इतना बड़ा टैटू करने का लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, शी वांटेड टू क्रिएट कि इट लुक्स लाइक स्टाइलिश, इट्स इंप्रेशन हो जाता है। और टू लुक यूनिक में और भी वो आ जाएंगे, इतना यूनिक भी नहीं, बट यस इम्प्रेशनेबल वाज द फर्स्ट थिंग दैट शी इज क्रिएटिंग, दैट यस जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये बहुत स्टाइलिश है, इतना बड़ा टैटू है, बिल्कुल मिस नहीं होता, पूरे हाथ में है उसके। वो अपना इम्प्रेशन आप पे छोड़ देती है। हाँ, अपना इम्प्रेशन छोड़ देती है और किसी का इम्प्रेशन कैरी भी कर लेती है, जैसे उसने उसकी मम्मी का करके लिया था। माँ का इम्प्रेशन कैरी कर लिया था ना अपने पर, कि हाँ, वो doesn't want to। मैम जैसे कोई पेशेंट आते हैं तो वो डॉक्टर को लाइक बेटा कैसे हो, बेटी ऐसे हो, ये हो, ऐसे बोलते हैं, तो मैम उसमें क्या आएगा मैम, उसमें वेरिएशन आएगा? नहीं, उसमें बेटी बेटा ये सब बोलते हैं। बेटा बेटी हम यानी वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, यानी बेटा यानी वो आपके फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे दिखा रहे हैं कि आपके साथ जॉइन है। यस लियाकत, इट इज अफेक्शनेट बिहेवियर, अफेक्शन दिखा रहे हैं ना आपके प्रति, दैट इज अफेक्शनेट बिहेवियर, है ना। आपके साथ अफेक्शन, प्यार, खुरूज दिखा रहे हैं ना। अफेक्शन मतलब टू शो द क्लोजनेस ना। यस सर। आपके साथ हाँ अफेक्शनेट बिहेवियर, आप कंप्लीट में जाइए, द रूब्रिक इज अफेक्शनेट बिहेवियर, है ना। ओके, तो अगर सर वही वाला पेशेंट, जैसे अभी मतलब मेरे पास एक केस आया था, तब मैं पूछती हूँ, तो वो बाद में फिर ऐसे भी बोलते हैं कि लाइक बेटा आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा, या मैं आपकी तरक्की हो जाए, तो मैम ये इंसाइटिंग में भी आएगा क्या? हाँ इंसाइटिंग, एग्जैक्टली, ये इंसाइटिंग है। ओके सर, ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम, अभी जैसे आपने बोला वो जिस हिसाब से एक्सप्रेशन दे रही थी, आपने इसको वाइवेसिटी में लिया, फिर इसको हम कम्युनिकेटिव से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसमें भी तो आदमी जेस्चर्स के साथ बात करता है। तो कम्युनिकेटिव में इसको जैसे अपनी कंडीशन के बारे में पेशेंट आपके साथ क्या कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो अगर वो आपके अपनी जो तकलीफ है कम्युनिकेट कर रहा है, तो देन आपके मन में वो उसकी बीमारी की पिक्चर आ गई, या देन यू कैन टेक कम्युनिकेटिव। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि हाँ वो कम्युनिकेटिव ऐसा लग रहा था, बट उसके अंडरलाइन थॉट क्या था कि डॉक्टर से कुछ गलती ना हो, सब पता चले डॉक्टर को, बिट्रेड ना हो जाए, इसके लिए शी वाज एक्सप्लेनिंग। यस बिट्रेल नहीं होना चाहिए, उसे धोखा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एलोपैथिक ले चुकी है ना। And whenever we get a rubric of why, we don't take the rubric of how. Okay, the intention was that the doctor should know everything, so the basic intention was fear of betrayal. Okay, so then we will not take communicative. नमस्ते मैम। यस नमस्ते मैम। यस, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है कि वेनरेशन एंड रेवरेंस दो जगह मुझे। अच्छा, थोड़ी सी क्या कंफ्यूजन है सर? ये कंफ्यूजन है ना कि कई जो है ना वो लगातार फोन पे जब भी बात करते हैं ना तो हमेशा नमस्ते सर, प्रणाम सर, ऐसा। तुम इतनी माइल्डली बात करोगे तो सब तुमसे नमस्ते नमस्ते ही बोलेंगे। तो मुझे ये लगता है ना कि वो रिवरेंस दे रहा है, लेकिन अभी मुझे फील आया कि वो वेनरेशन है लगता है। नहीं बेटा, देखो वेनरेशन का मतलब क्या होता है ना, वेनरेशन आप जैसे आप स्कूल के प्रिंसिपल के मिलने गए, है ना, आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप प्रिंसिपल के साथ कैसे बिहेव करोगे? प्रिंसिपल के वेनरेशन, भले आप बाहर आके गालियां दो मन में, और रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे ना सर। हाँ, तो दैट इज वेनरेशन। ओके, आप मंदिर में जा रहे हो तो आप भगवान के सामने कैसे पेश आते हो भगवान से, दैट इज वेनरेशन। भले आपके मन में क्या इंटेंशन है वो अलग हो गया। और रेवरेंस वाला बंदा ये होता है ना कि वो सबसे रिस्पेक्ट से बात करे। रूब्रिक क्या है? रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, है ना, जो भी उसके आसपास है सभी के साथ वैसा पेश आए। आपको नमस्ते, अभी जैसे आपने भी दोबारा नमस्ते किया, तो ये आपका बेसिक मैनरिज्म भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
अब इसके पीछे आपका ये नहीं था ना कि आपको अभी मैडम से काम है, यस सर। उनके पीछे काफी बार इंटेंशन भी होता है। ओके ओके सर। इसका रूब्रिक माइल्डनेस है। अच्छा थैंक यू जिस सर। तरीके से बात कर रहा है ये माइल्डनेस वाले रूब्रिक। हाँ हाँ राइट। वेरी नाइस बेटा। व्हाट इज योर नेम? रंजीत आर्या सर। ओके रंजीत, वेरी नाइस। यस मैडम, carry on please. Yeah. So this is her, how she is looking. आप उसका टैटू देखो यहाँ पर पूरा हाथ में कलर वगैरह के साथ है उसके अंदर। ये इसमें थोड़ा सा ब्लर है बट ये पूरे हाथ में है उसका। छुप नहीं सकता है, वो दिखेगा ही। नहीं सकता। और उसके हाथ टी-शर्ट भी देखो, वो भी टैटू जैसा है। हाँ yes, this is her cyst which was swollen and painful. उसने FDC किया था, so it was also अंदर वो पूरा रेड हो गया था, very painful cyst, and but beautiful result with homeopathy. Just hyoscyamus 6 BD for 3 days, and I said speed with which homeopathic medicines act, and after 3 days, within a week, her cyst started discharging. पहले पस निकला, then a lot of fluid started coming out from that end point, and अभी भी sticky discharge निकल रहा है. So within 15 days, her entire pain subsided, and the cyst also has regressed. You can see that cyst has regressed completely. So now yesterday only she had come for a follow-up. So this is how flat it has become. Lovely. Fantastic, fantastic. Let's clap for madam. Thank you. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Really great. So coming to understanding little bit of metaphysics of thyroid, कि इस लड़की को इस तरीके का thyroid होना या cyst develop होना कि क्यों हुआ? So how we know that thyroid is related to your throat chakra? It is an area where you are able to express yourself. Self-expression is the role that is of thyroid. So thyroid represents the essential aspect of human being. It is through our throat that we express our innermost strength of will, ability to follow our dreams and share our innermost desires of the heart. So it is a center of demonstrating our choice. When one's ability to speak up or to be heard has been shut down, blocked, or belittled, then the throat and the jaw becomes constricted, then causing disruption of the flow of the thyroid hormones, blood and other essential biological substances, which influence the metabolic rate, protein synthesis, and intellectual development. So now retrospectively हम समझ सकते हैं कि जो father के साथ उसका relationship था, कि she was getting very angry on her father, but she was not able to express. That वो father को भी बोल नहीं सक रही थी, बोलती थी but वो father was पूरा he is a very loud person, वो गाली देने लगते हैं, तो वो बोली फिर ऐसे तो मैं ही चुप रहूं, that type. So वो जो गुस्सा उसने अंदर रखा हुआ था, यहाँ पर husband को भी कुछ नहीं बोल पा रही है घर में, because she has to, that's the reason she said I'm stressed, I'm very stressed with all this, handling my husband, घर पे भी बेटा काम. So this is that that bottled up anger which led to that development of cyst. अगर हम इसको retrospectively समझें. अरे बाकी लोग अपने माइक बंद करो प्लीज. So few rubrics of hyoscyamus, like fear of being betrayed, it is like dhoka or trust. So that's why hyoscyamus patient will keep searching for the doctor जिसको वो trust करे. So इसीलिए उसने आके मुझे क्या बोला कि the name I remembered was your name. You know me from beginning. So कुछ गलती नहीं होगी. So वहां पे trust factor बहुत ज्यादा आता है. So इसलिए I said the fear betrayal was the the core thing that was running through and through the case, right from beginning till the end. And very characteristic about this patient, hyoscyamus talking business, सारी reports आपको एक एक करके दिखाना कि कुछ भी miss out नहीं हो. Then gestures, जो सारे हाथ के actions करके, gestures, hands, involuntary motions of. Then there's also gestures makes actor like वो भी हम समझ सकते हैं. Single remedy है उसमें hyoscyamus. Speech,
This patient ki was, speech fluent, speech vivacious, very lively, attractive, apna sara wo expression ke saath she was explaining. Then impressionable. Madam, speech fine may be single hyoscyamus. Yes. So many speech rubrics are there in hyoscyamus. So यहाँ पे मैंने, of course, I did not take it as for repertorization, but retrospectively अगर हम समझे तो this girl also was trying to do a lot of animation when she was explaining. She was, her speech also was like that. She tried to be very friendly, very open, like somebody said, na, वो very bold girl, very like libertinism. So ये सारी चीजें अगर हम समझे, so very, outward extrovert kind of a person, she is. So impressionable, easy to influence, or carries the impression of something or someone. And delusion, images, phantom sees, frightful also. So this is like, patient ke mind mein that vision is there, which is very scary. So for her, that scare was कि कहीं ये cancer ना हो. So for that reason, she was, उसने वो टेस्ट भी करवा लिया था देखने के लिए कहीं ये कैंसर तो नहीं है. So this is all about hyoscyamus. Thank you very much. Madam, one question not pertaining to case, but one of my case. एक छोटा 3 साल का बच्चा है, जरा भी कुछ बोलने को बोला है तो पूरा टाइम गणपति बाप्पा मोरिया पूरा दिन चालू रहता है. I don't understand what rubric to take for that. Okay. पूरा दिन मतलब ना बोलेंगे ना मत बोल तो भी गणपति बाप्पा मोरिया उसका चालू ही रहता है. लियाकत सर और क्या है इसमें? और क्या है? क्या? What else is there? थोड़ा क्या हुआ, वो मम्मी को पहले एक लड़का था, ये दूसरा बेबी हुआ ना, they were in United States, तो उनको समझ गया लड़का है, तो मम्मा was very unhappy कि उसको लड़की चाहिए थी. तो तब से थोड़ा ये बेबी का उसके प्रति लगाव कमी हो गया. बेबी बॉर्न हुआ तो भी उसके लिए इतना प्यार नहीं था. थोड़ा सब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिलेड, लेट लर्निंग टू टॉक, वॉक. और अभी बेबी इज फाइन बट अपने मूड में रहता है. पूरा दिन कोई भी चीज देखी ना तो हर चीज को देखे गणपति बाप्पा मोरिया. अभी गुजराती है, खाना खाते तो उसको वो गाठिया ही चाहिए खाने के लिए और कुछ तैयार नहीं है खाने को. दाल चावल ही खाएगा, नॉट रेडी टू ईट एनी ऑफ द वेजिटेबल्स ऑल्सो. पहले स्टूल के लिए जाता तो मम्मी को बोला का चड्डी पहनाओ तो ही यूज्ड टू पास मोशन. इस पे बैठने को तैयार ही नहीं है. WC पे कि हाँ कमोड पे मीन्स अभी वो थोड़ा ठीक हुआ है बट खाने में वगैरह में ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट. करते नहीं और पूरा दिन गणपति बापा, घर के परेशान हो गए गणपति बापा मोरिया सुन के. इतनी बार वो बोलता है, जोर जोर से बोलता है, मानता नहीं है किसी की बात वो. अच्छा, सबसे पहले तो आपने बता दिया रूब्रिक ऑब्स्टिनेट, है ना? हाँ सर. और दूसरा ये है कि दिस इज एलिमेंट फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड बाय मदर, राइट? हाँ हाँ सर. So if you take these two rubrics, then we come up with 6 remedies. Okay, carcinosine, magmur, medorhinum, naxomica, platina, thuja. Okay, अब इसके अंदर अगर हम स्टडी करें तो एक ही चीज को बोल रहा है ना? हाँ, एक ही चीज बोल रहा है. हाँ, so that fixity is which remedy now? Just see the repertory. Okay, now if you see this, ailments from being neglected by mother and obstinate children. Exactly. Now see which remedy will you give? Which remedy has this fixity? Thuja. Because it has fixity in mind. Very good. Thuja. 3 बार दे दो. And also religious. मैडम ने thuja बोल दिया. 3 बार thuja दे दो. ठीक है. Simple. Anal fixation भी ले सकते हैं मैम. Exactly. बेटा बहुत सिंपल चलना है. बहुत हर चीज के लिए रूब्रिक मत ढूंढो. पहले ना रूब्रिक हमको पेशेंट समझ के फिर यूज करना है. यस सर. क्या क्या रूब्रिक लेंगे? नेग्लेक्टेड बाय मदर एंड ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन. हाँ अच्छा. एंड एज डॉक्टर वैशाली राइटली सेड, दिस कैन बी एनल फिक्सेशन आल्सो. अच्छा. हाँ मतलब जो बात पे अटक गया वहां से आगे बढ़ता नहीं है, ऐसा ना? एग्जैक्टली. ओके सर. या अगर आप एनल फिक्सेशन डाल दोगे तो देन यू कम डायरेक्टली थ्रू जा. देखो, सी दिस रूब्रिक.
चलो पैसे जमा कर दो इग्नाइटेड के खाते पे। Suja is coming, Suja is coming. चलो अभी इग्नाइटेड माइंड के बैंक अकाउंट पे डाल दो पैसे। Very nice. Nice. It's very simple, beta. See, what we learned from madam's case today is we have to go very simple. है ना? Instead of trying to find out a rubric for every sentence the patient says, that is a very bad trap. Now, if the patient is coming up with the investigations, then you will take light desire. No, that's not right. है ना? You have to understand the crux. उसको क्या चाहिए? Exactly. First, you have to understand what Dr. Hanuman sir has said, that repertory is a tool, right? Now, what is a tool? Tool मतलब होता है ना आपके इसमें पाना, screwdriver and all that. आपको हेल्प करता है वहां तक पहुंचने के लिए। आप पहले टूल आप कहाँ यूज करेंगे? पहले प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, फिर टूल ढूंढोगे ना उसके लिए। हाँ बराबर है। टूल लेके घूमेंगे। बराबर है सर। हाँ। First, समझ you गए। understand the problem and then use the tool. Okay, sir. Yeah. Hello, ma'am. Madam. Questions for madam. Thank you, sir. Thank you, Liaquat sir. Hello. Yes. The question is for madam Nishu. It's for you. Ma'am, speech fine means rubric बता दीजिए please. Speech fine. Speech fine is very like there is no बहुत अच्छे से पेशेंट बात कर रहा है, जैसे रिफाइंड हम बोलते हैं ना, फाइन इज कमिंग फ्रॉम रिफाइंड स्पीच, बट वहां पे अगेन इट इज अ सिंगल रेमेडी जो रूब्रिक्स है, जहां पर ओनली वन रेमेडी इज देयर, सो चांसेस आर दैट वी मिस आउट ऑन द अदर रेमेडीज आल्सो. सो ये सब चीजें लाइक सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स वी कैन टेक फॉर कंफर्मेशन, rather than for repertorization. So speech fine is also like बहुत अच्छे से सलीके से पेशेंट बात कर रहा है. और यहाँ पर फाइन क्या होता है? फाइन होता है ना, आप आटा देखते हो ना, फाइन होता है. कपड़ा देखते हो, फाइन है ना. तो इट इज टू डू विद द टेक्सचर, इट इज टू डू विद द कंसिस्टेंसी, है ना. इट इज टू डू विद द फील, राइट. Softly बात, like soft spoken जैसे. Different. Soft is then again different. That is again too polite. Okay. Fine has to be very fine, like no fault. There will be no wrong words. There will be absolute correct words, to the point, not taking you anywhere else. Okay. Sir. Fine has to be very fine. Fine से final आता है, आप समझ रहे हो? Yes, sir. Fine के बाद में final आया हुआ है. You understand? So it is final. Like उसके अंदर कुछ भी रत्ती बराबर भी कुछ भी उसमें आपको फर्क नहीं आएगा. जैसे दिलीप कुमार साहब की जो डायलॉग डिलीवरी होती थी, वेरी फाइन. Yes, sir. आप नसरुद्दीन शाह साहब की डायलॉग डिलीवरी देखो, फाइन. बच्चन साहब का डायलॉग शुरू होता है, एंड किधर होता है समझ में नहीं आता है. शाहरुख खान का डायलॉग किधर होता है पता नहीं चलता है. समझ रहे हो ना? So that fineness has to be there, Okay. ठीक है सर. Okay, thank you मैम, thank you sir. सर ऐसा थोड़ा ज्यादा सिखा दीजिए. वुमेन्स वीक क्यों हर वीक को वुमेन वीक समझ के जरा वीक में दो लेक्चर रखा कीजिए. घर में एक वुमन है और दूसरी मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है. 2 वुमन बहुत हो गए. हाँ नहीं बट अभी ये सब जितने भी मैन वुमन है लेक्चर्स में, वो बोल रहे हैं कि वीकली 2 बार ऐसे लेक्चर्स रखिए तो होम्योपैथी को और एम्पावरमेंट मिलेगी. हमारे घर की वुमन हमको अकल देंगी. अरे मोबाइल से किधर अकलेगी सर? आप कर दीजिए, मोबाइल से नहीं हकल सकते हो. सर इट्स अ रिक्वेस्ट. देखिए आपको कैसे जमता है आप लोगों की टीम को, बट कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा. आपका इंसाइटिंग रूब्रिक हमको समझ में आ गया, लेकिन सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. वुमेन्स डे का जो भी बहाना है आप सिखा रहे हो, दैट इज गुड फॉर अस. कोशिश करेंगे बेटा, इंशाल्लाह. आप प्रे करो, इंशाल्लाह. ठीक है सर. ओके, थैंक यू मनीषा मैम, इट वाज ऑसम. मजा आ गया. थैंक यू. सर अपने बाकी के जो हुए हैं सेशन, उनकी वीडियोस हम लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, तो वो कहाँ मिलेंगी देखने को? आएंगे लास्ट में YouTube पर अपने चैनल पर आएंगे. उसका भी आपको हम लोग चैनल का लिंक भेजेंगे ग्रुप में. थोड़ा सब्र करो. हाँ ठीक है फिर सर. ओके, थैंक यू. हाँ, क्योंकि फिर वो आप प्रूव मत करो कि women are impatient. You have to prove that you people are patient. Thank you, Manisha madam. Thank you everyone. Thank you.
थैंक यू सर। अशोक भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। भगवान आपको क्या इंसाइटिंग बोल रही हो अभी मैं। हाँ हाँ, ये पीछे बैकग्राउंड में मानसी मैडम बैठी है ना, प्रणीता मैडम, सबसे बड़ा थैंक यू इनको दो। उनको थैंकफुल बोल के हो गया, आप अभी बहुत लेट आए ऐसे वो नहीं, मैं शुरू से था लेकिन थोड़ा सा बिजी था पेशेंट में, तो कैमरा अशोक तेरा वीडियो ऑन करना भाई। भाई अरे आज लैपटॉप में गड़बड़ है यार। अच्छा, मैं समझा बालों को कलर करा के बैठाएंगे। नहीं, ये सब लोग ये लड़कियों से हमसे काम करा के लिए समझे नहीं। वेरी नाइस। मेन अशोक सर के लिए क्या रूब्रिक रहेगा, सबसे काम करा सकते हैं। अशोक ये निकाल दीजिए। ओके, ओवर टू यू। मनीषा तू कर, मानसी तू करना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू भाई, थैंक यू मानसी मैडम, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। वोट ऑफ थैंक्स बाकी है, कौन करना है? हेलो, थैंक यू मैम। मानसी मैडम, वोट ऑफ थैंक्स। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. ऑफिशियल थैंक यू। अरे रुको सब लोग, वोट ऑफ थैंक्स। वेट Yes, ma'am. Yes, sir, we are there. सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ मिलेगी। Okay. Yes, also yesterday session was missed. Yeah. All the links you will get. Any participant has any question regarding any of the session from beginning to end, you please put your questions in Ignited Mind groups with the name, Okay, sir. which speaker was there and your question. We will try to answer your questions in the group also. Yes, sir. Okay, Thank you Mansi, so much. over to Dr. Mansi. Yeah, it was Thank a you so very much, wonderful session as usual. Very simple remedy, but the way you taken the case and you worked on the case and analyzed the case, it was very, very wonderful. And I thank you behalf of Ignited Minds by PHF and HSH for joining in this Women's Week celebration. Thank you everyone. Thank you Mansi, thank you Liaquat sir, thank you Ashok sir, Thank you, ma'am. thank you everyone.